Yeah, hello everyone. I hope you all are doing well at your ends. I'm just waiting for another 5 minutes. Let everyone join and then I'll start with the class. Uh, just waiting for, yes, Nidhi, hello, hello. Yes, just waiting for everyone to join and then I'll start with the class, guys. Raj, Abhishek, hello, hello. Yeah, Raj Nihal, hi. I hope you're doing well. Kapil, Dev Narayan, Pooja, Parth, Tushal, Vipin, Yash, Arvind. Welcome to the class, guys. Welcome to the class. Yes, Manisha, Naresh. Yes, 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 guys. Today we'll start with the other aspect of the scapula, the anatomy of the scapula. We will continue with the anatomy of the scapula, and today I will be discussing first about the processes of the scapula, and after that I will move on to the muscle attachments of the scapula. Okay, processes, muscles, ligaments, functions, articulations, and all other things. Yes, yes. Garvit, Nafas, Sanvi, Hoor, Sanya, Samik, Sakib, Mesbah. No, comments are just flaunting away right now. Sachin, Uma, Samik, yes. Nihal, welcome, welcome to the class, everyone. Dipanshu, welcome, welcome. Pranjal, welcome to the class. So we'll just start in another 5 minutes, just 2 or 3 minutes more. Yeah, let everyone join, guys, and then we'll start with the class, guys. Yeah. Please, it's a request to everyone, be till end of the lecture. ये नहीं कि अभी join कर लिया and after some time you guys will like just move or disappear like Mr. India. So I don't want that. I want you, everyone, to be throughout the lecture, writing the notes along with me. And if there are any doubts, you can personally text me on WhatsApp. I will be happier to consult them. Yes. Good evening everyone. Bhupender, good evening. Rajesh, Pandana, Yash, very good guys. Rasab, yes, yes. Akash, Neha, very good. Yes. Rahul, good evening. Sharja, good evening. So we'll just start, let others join. Yeah, just waiting for all the students to join us up and then we'll start. Yeah. Hmm. It's okay, like if it's not a compulsion to anyone, if anyone wants, he can be there throughout, or yeah. Yes, it's just everyone has to like be along with me throughout the lecture, and that is the need right now, and that is the need. Students, I personally believe that learning live is the best way to address all your doubts. Okay, to like overcome any kind of complications like you feel while reading. Okay, so it's up to you guys. So now we will start with the processes of the scapula. I hope everyone is along with me. Just give me a thumbs up in the chat box right now, and like be ready with your notes and your pen, pencils, everything. Now we'll start. Just give me a thumbs up. Audio and visuals are clear to each and every one. You, I think everyone is audible as of now. Yes. Jangir, Akash, I don't have time for all this shit. Kindly leave the lecture ASAP. If there is any technician right now, like please kindly block this person out there. Yeah. Okay. So let's start. Yeah. So yes. Yes. Very good. Okay, guys. So now we will start with the processes of the scapula. देखो processes का मतलब क्या होता है? What do you understand by the term processes? Guys, simply understand, if suppose this is a body of a bone, okay? If suppose this is a body, processes will be certain projections that will be coming out of the body. It will be certain
projections that will be coming out of the body. Simply अगर हम अपनी body की बात करें, जो ये हमारे hands है, हमारी legs है, these are also the projections which are coming from the central part of the body, and that is the way you have to like understand कि जो processes of the scapula है, these are also the certain bony projections which are coming out of the body, which are coming out of the body. Yeah. So remember guys, remember guys, now we have three processes of the scapula, and you are very well aware that the three processes are the spinous process, the spinous process, the second one that is the acromion process, acromion process, and the third process of the scapula, it is the coracoid process, coracoid process. So we will discuss each of these processes in detail. So anyone, if anyone asks you what are the processes of the scapula, there are three processes of the scapula: the spinous process, okay, the acromion process, and the coracoid process. So we have the three processes of the scapula. Now guys, I simply want the very first one that we are going to discuss. It is the spinous process. The one which I am shading with the red, it is the spinous process. Okay, so just write down the heading as the spinous process. Spinous process. Spinous process. Yes, Ronak, Anshay, Geetu, very good, very good. Yeah, just be along with me guys throughout the lecture. Don't skip the lecture in between guys. Don't skip the lecture. Try to be along with me and try to write the notes along with me. Okay. Now guys, spinous process. You can very well see it is a shell-like projection. Okay. Or I can say a shelf-like projection. A shelf-like projection from the upper part of the dorsal surface. From the upper part of the dorsal surface. Ashok, Dikshita, Vijay, welcome to the class and kindly be in the class throughout. Upper part of the dorsal surface. Dorsal surface. Now guys, try to understand the fact over here. कि ये सबसे पहले कौन सा व्यू है? I am waiting for the answers. Which view is this? In which view you are visualizing the scapula? I want the answers right now in the chat box that I have already discussed in the previous video of the osteology of the scapula. This view should be clear and I want the answers in the chat box. Yeah. Hello everyone. Yeah. Hello everyone. Yes. Yes. Rohit, Munne, Soumya, Pooja, welcome. Okay, Soumya, Pooja, yes, it is very, very right. Yeah, it is the posterior view in which you are visualizing the scapula. Posterior, also called as the dorsal view, bachcha. Dorsal view में आप scapula को देख रहे हो, and you can see on the upper part only. Okay, just going from the upper to the down, you can see in the upper part there is a shell-like projection which is coming from this particular surface. And that is called as the spinous process. And remember that spinous process is triangular in shape. It is triangular in shape. Everyone is right. Yes, Tamanna, Hariom, Raj, Shreya, Sanya, Bhupender, Shoaib, everyone is right. Yes, very good, very good. Okay, so remember that this spinous process is somewhat triangular in shape. Okay, and remember it has two surfaces and two borders. Make a flowchart guys. Have a habit of making a flowchart in your notes. That will actually help you throughout. Okay. So remember it has two surfaces and two borders. Two main borders. Okay. Now two surfaces are superior surface and the inferior surface. Superior surface and the inferior surface guys.
We have the superior surface of the spinous process and the, okay, no, okay, just a moment. Yeah, inferior surface. Apart from that, yeah, the third border is basically the free border. That's why I'm not mentioning it, Neha, over here. It's the free border, that is the lateral border. Okay, so that I'm not mentioning over here. But remember, we have the two borders that I will mention on the next slide because I don't have that much space, or like, okay, I'll just mention on the other slide. So yeah, or just over here only. Basically, we have two borders, and you can very well appreciate it is the anterior border and the posterior border. The lateral border is free, that's why I'm not mentioning it over here. And remember, the posterior border is basically called as the crest of the spine. The posterior border, it is basically the crest of the spine. Yes, crest of the spine. Crest of the spine. And remember that the posterior border basically has two lips. The posterior border has two lips, the upper lip and the lower lip. The upper lip and the lower lip. And remember, yes, Kritika, it will be the same. Yeah. कोस्टल एंड द डॉर्सल, बच्चे कोस्टल का मतलब ही आपका एंटीरियर वाले उससे होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इट्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ना. कोस्टल हमने सिर्फ सरफेस एंटीरियर के रिस्पेक्ट में यूज किया था जब एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला की बात कर रहे थे. कोस्टल सरफेस क्यों बोला था? बाय बिकॉज इट वाज अटैच्ड टू द रिब्स. नाउ इन द पोस्टीरियर व्यू, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटीरियर बॉर्डर्स, ओके, anterior border firstly, okay, and the posterior border. So it is basically the borders which are on the posterior side, okay, not on the anterior aspect, okay. That's why not coastal over here. And remember, we have two lips, the upper lip and the lower lip. Remember guys, upper lip पे एक muscle attach होती है, and try to mark it with a different pen because all the muscle attachments are very very important. Here the trapezius muscle gets inserted. It is the trapezius muscle which is present on the upper lip of the posterior border of the spinous process. Trapezius muscle. And on the lower lip, you will find the deltoid muscle origin. You will find the deltoid muscle origin. Deltoid muscle origin. So trapezius muscle का insertion होता है, or deltoid muscle will get originated from this particular area. Originated. So yes, spinous process, bache, just you have to remember two things. There are two surfaces, two borders. दो surface कौन से? Superior, inferior. Nothing much of like attachment वाले process से कोई लेना देना नहीं है. Apart from that, we have two borders which are very very essential. The anterior and the posterior one. Anterior, again, it is not of very much significance. The posterior border, also known as the crest of the spine, okay, basically gives, it is bifurcated into two parts, okay, the upper lip and the lower lip. And remember, the upper lip, basically a muscle inserts over there, that is the trapezius muscle, and in the lower lip, basically a muscle attaches, that is called as the deltoid muscle, okay. A muscle originates, that is the deltoid muscle. That is the deltoid muscle. Yes, very good guys, very good, very good. Yeah, I will just try to show you in again I will discuss the muscle attachments in another 15-20 minutes, Kritika, and then I will show you the diagrams also. Don't worry right now. Just mention the names over here because I wanted you, along with the anatomy, along with the parts, just write the name of the muscle, and after some time we will able to see it in the diagram as well. So kindly don't worry, okay? So yes, I hope everything is going smooth right now. Coming on to the next process, guys, and the next process that you can very well appreciate. Okay, the next process basically you can very well appreciate over here. Okay, I just wanted to highlight this particular blue. Can anyone tell me the name of this particular process? What is the name of this particular process? The blue part which I have shaded.
the blue part which I have shaded, can anyone tell me the name of the process? I'm waiting for the answers, everyone. Yeah, just let me know the name of the process, guys. And I will write it as the lateral continuation of the spine. Lateral continuation of the spine. Lateral continuation of the spine. Yes, Neha, it is very right. नहीं बच्चे बच्चे रेड वाला है ना, रेड वाला तो स्पाइनस हो गया. यस, रेड वाला तो स्पाइनस हो गया. बट ये जो स्पाइनस प्रोसेस आगे की तरफ कंटिन्यू करता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्रोमियन प्रोसेस. यू कैन वेरी वेल सी ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो मैंने अभी मार्क कर रहा हूँ, you can very well see that is the acromion process and that is a continuation of the spinous process laterally. ये lateral side पे होता है ना glenoid cavity, उस दिन भी बताया था glenoid cavity is on lateral side. And just try to remember, yes, कि acromion process is the continuation of the spinous process laterally. ये lateral side में that is the continuation of the spinous process. Yes, everyone is right. Everyone is right over here. Yeah. So just mention over here, guys, that it is the lateral continuation of the spine and that is again the acromion process, the blue one, the acromion process. And remember that it projects forwards, okay? It projects forwards and slightly upwards. Slightly upwards. And remember, overhanging the glenoid cavity, overhanging the glenoid cavity, overhanging the glenoid cavity. You can very well appreciate in this particular image that it's just above the glenoid cavity. ये जो इसके नीचे glenoid cavity, you can very well appreciate, जो शोल्डर जॉइंट बनाने में हेल्प करता है, दैट इज लोकेटेड लेटरली. इसके जस्ट ऊपर आप लोगों को एक्रोमियन प्रोसेस हैंग करता हुआ नजर आएगा. ओके, दैट इज द एक्रोमियन प्रोसेस व्हिच विल जस्ट हैंग अबव दिस ग्लेनॉइड कैविटी. ओके, व्हिच विल जस्ट हैंग अबव दिस ग्लेनॉइड कैविटी. सो जस्ट मेंशन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस. सो रिमेंबर द टिप ऑफ दिस spinous process, okay, that is the acromion process. I can also write it as the tip of the spinous process, क्योंकि spinous process के just tip पर ही है ये पूरा का पूरा. So remember, it is the tip of the spinous process, guys. And remember that it is basically having two surfaces. It is having two surfaces and two borders. Two borders. इसके दो surfaces आप लोगों को ध्यान रखने हैं. That is the superior surface and the inferior surface. Inferior surface. Yes, Saqib, you are very much right. It articulates with the head of the humerus. We will discuss it in articulation wala part. Just after some time we'll discuss it over there also. Yes, and two borders, guys. Everyone knows we have two borders. That is the medial border. The medial border, and along with that we have the lateral border, guys. Along with that we have the lateral border. Along with that we have the lateral border. We'll discuss it in clinical anatomy. Just wait, just first discuss the basic and then we'll come to the clinical anatomy, don't worry. So yes, the medial border basically it provides an articular facet, and remember it helps in the formation of a joint that is called as the acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint. And you all know that कि ये acromion process हो गया ये वाला और clavicle हो गया. So ultimately clavicle and acromion process आपस में two bones are joining. Two bones means a part of the scapula bone and the clavicle bone both are joining. It means that there will be a formation of joint. तो नाम क्या हो जाएगा? Acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint. And remember that it is on the medial border of the tip of the spinous process. Apart from that, remember that
the lateral border, basically it is in continuation. It is in continuation with the lower lip of crest of spine. Okay, lower lip of crest of spine, or also called as the posterior border. पोस्टीरियर बॉर्डर के जस्ट कंटिन्यूएशन में है. एंड रिमेंबर कि इस पे आपको एक मसल अटैचमेंट देखने को मिलेगी, दैट इज द डेल्टॉइड मसल गाइस, दैट इज द डेल्टॉइड मसल एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हियर, it originates from here. Yeah guys, be in the class. Yes, throughout the class just be over here. Guys, can anyone tell me ki yeah which border is this right now? Which border is marked as B over here? Okay, can anyone tell me which borders are these, A and B? I just want the answers from everyone. If you all are participating, just let me know the answers over here. Yes, so I'm waiting for the answers guys. Yes, I'm waiting for the answers. Just A and B. Yeah, A wala median, no. Yeah, no. Yes, A is the lateral border. Very good Kritika, very good. Yes, Pooja. Yes. Yes, B is the medial border. Yes, very good. Abdul, Neha, Lokendra, very good. बच्चे A lateral होगा. सिंपल सी बात है, मैंने बोला था ग्लिनॉइड कैविटी देखने को मिल रही है. ग्लिनॉइड कैविटी देखने को मिल रही है, तो उसके जस्ट नीचे जो बॉर्डर आ रहा है, दैट विल बी द लेटरल बॉर्डर, एंड जस्ट अपोजिट टू दैट विल बी द मीडियल बॉर्डर. जस्ट अपोजिट टू दैट विल बी द मीडियल बॉर्डर गाइस. जस्ट अपोजिट टू दैट विल बी द medial border. Yes, just opposite to that will be the medial border. Coming on to the third process that you all have to understand, that is the coracoid process. That is the coracoid process of the scapula. That is the coracoid process of the scapula. And remember ki which surface, okay, which view is this guys? Which view is this? Can anyone tell me which view is this? I'm just waiting. Yes, everyone is right. Whosoever just have understood कि lateral side पे तो हमें glenoid वाला part देखने को मिल रहा है ना, glenoid cavity देखने को मिल रही है, तो ultimately it will be the lateral border. Ultimately it will be the lateral border. और उसके opposite वाला तो medial हो जाएगा, that is just 5 centimeters away from the vertical spine. Okay, so yes, everyone is right. Yeah, which particular view? व्योमकेश ये very good. Pooja, very good. It is the anterior view guys. It is the anterior view. यहाँ पे तुम्हें spinous process देखने को मिल ही नहीं रहा ना. You are not able to see the spinous process over here. Anterior और posterior में difference ये है कि anterior वाले पे तुम्हें spinous process देखने को नहीं मिलता. You will find the spinous process in the posterior view guys. Okay, you will find the spinous process in the posterior view. Yes, Pranjal, Abdul, Danish, Tamanna, very good guys. I am totally happy that you all are participating as of now. And yes guys, it's yes, just be with me. Yes, anterior, very good. Everyone is right. I'm just able to read all the comments over here. Prasanna, very good. Yeah, Shreya, Shoaib, Heather, Rafiq, Rajveer, very good. Dikshita, very good guys. Astha, Neha, Vijay, Shruti, you all are participating. That's like, remember that. Now coming to the point that coracoid process of the scapula, it is a bent finger-like structure. It is a bent finger-like structure. Bent finger-like structure. And remember that this process, basically it projects forwards and slightly laterally or lateral from the upper aspect of the head of the scapula, of the head of the
scapula. Remember guys that the coracoid process basically ये forward की तरफ, that's why it is the anterior surface ना, anterior surface, that's why I'm telling you कि it is projecting forwards and slightly lateral, lateral side पे है ना, खुद देखो क्योंकि glenoid cavity के just ऊपर तुम्हें देखने को मिल रहा है, okay, and from the head of the scapula. So that means that coracoid process is somewhat located laterally, ठीक है, body के lateral side पे located है, ठीक है, and ultimately it is just projecting forward. और वैसे भी एंटीरियर सरफेस में तुम्हें ज्यादा प्रोमिनेंट ये दिखाई दे रहा है. अपार्ट फ्रॉम गाइस रिमेंबर दैट इट हैज टू सरफेस एंड टू बॉर्डर्स, टू सरफेस एंड टू बॉर्डर्स. देखो अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, टू सरफेस और टू बॉर्डर्स होंगे, ठीक है. एक तो सबसे पहली बात सरफेस का एरिया ज्यादा होता है, तो अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर में सरफेस एरिया ज्यादा है, तो सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस. बॉर्डर में एरिया कम है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट विल बी द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वन. सो रिमेंबर वी हैव टू सरफेसेस गाइस, इट इज द सुपीरियर सरफेस एंड we have the inferior surface guys, we have the inferior surface guys, and apart from that guys we have two borders over here, that is the anterior border, that is the anterior border, and we have the posterior border guys, we have the posterior border. And remember that three muscles are present, three muscles are present, and how to bifurcate these three muscles, so write down that two muscles are present on tip of coracoid, tip of coracoid process, and these two muscles are, अच्छे से नाम लिखना है, दैट इज द कोराको ब्रेकियालिस, कोराको ब्रेकियालिस, एंड वी हैव द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, वी हैव द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, कोराको ब्रेकियालिस, एंड वी हैव द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स. एंड रिमेंबर टू मसल्स तो ये हो गए, और वन मसल on the posterior end, and remember that the name of this muscle, it is the pectoralis minor muscle, pectoralis minor muscle. My question to you guys, like which ribs basically you can find the pectoralis minor muscle. Pectoralis minor muscle हमारी जो कोस्टल रिब्स होती है उसमें से किन रिब्स पे तुम्हें देखने को मिलता है. इफ एनीवन नोस जस्ट गिव मी द आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. या शोएब राजा, बच्चे एक बात समझने की कोशिश करो, अभी जैसे पॉइंट्स आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी में. समझ में आता है तो रहो, अदरवाइज लीव. कृतिका, व्योमकेश, नहीं, नो नो गाइस. Yeah, it is 3, 4 and 5. Yes, it is 3, 4 and 5. Yeah, majorly वहीं पर देखने को मिलता है. Just find it on the, yeah, just find it on, yeah, the pictures as well. Yes. Okay. हाँ, मतलब मेजॉरिटी ना 3, 4, 5 पे देखने को मिलती है. इट्स नॉट ऑन द सेकंड. सब एक ही आंसर रिपीट कर रहे हैं. एनीवेज, चलो. नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू द नोचेस ऑफ द स्कैपुला, एंड रिमेंबर दैट द वेरी फर्स्ट नोच व्हिच यू कैन विजुअलाइज ओवर हियर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, this particular notch, it is the suprascapular 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 notch. Yes, Mubassir, very good.
It is the suprascapular notch. Now guys, you can see that अब मुझे clearly बता दो कि which border is this. ये जो मैं blue से mark कर रहा हूँ, ये कौन सा border है? Which border is this? I just wanted to know if you guys have like watched my previous video on the normal anatomy of the scapula, you will be able to recognize the particular border which is mentioned over here. Yes, just let me know which particular border is this. Yeah. Yeah, this is the suprascapular notch, and remember that it is from the medial side to the lateral side, and you can find that this suprascapular notch, it is somewhat like near to the lateral side. Okay, yeah, it is the superior border. Very good, Arvind, Nidhi, Karanveer, very good guys. Shankar, very good. Lokendra, very good. Abdul, Shakir, very good. I'm quite happy. Yeah, Sakib, Neha, Alfia, Rohan, Vyomkesh, Kritika, very good. Very good guys. You all are just phenomenal today. I mean, all of you are participating and answering the questions. That's like very good. So remember that it is the superior border, guys. Very, very good. And you can just see that it is just present at the root of the superior border. Okay, and that is a notch. Okay, that is a notch. And remember that this suprascapular notch, it lies at the lateral end, at the lateral end of the superior border, of the superior border, close to the root of the coracoid process, close to the root of coracoid process. Yes, everyone is right. Yes, close to the root of the coracoid process. You can see that this particular structure, which I am going to just mark in this green, you can see this is the coracoid process, okay, which is projecting forwards, and it is just lying at the root of the coracoid process. It is just lying at the root of the coracoid process. Okay. Apart from that, guys, now 2-3 points which are very, very essential right now, and mention these in your notes. It is transformed into foramen. Remember, it is transferred or transformed into foramen. Okay, by a ligament that is present over here, that is called as the suprascapular ligament. Suprascapular ligament. वैसे भी इस लिगामेंट का नाम आप लोगों को कैसे याद रखना है? आप लोगों को पता है कि ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है स्पाइनस प्रोसेस के. अब सपोज दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस और ये पेन इज द स्पाइनस प्रोसेस. तो स्पाइनस प्रोसेस जो है पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, द अपर स्मॉल पार्ट एंड द लोअर लार्ज पार्ट. तो अपर स्मॉल पार्ट वाला जो एरिया है दैट इज द सुप्रास्पाइनस फोसा, और यहाँ पर मसल होती है सुप्रास्पाइनस मसल. ओके, और अल्टीमेटली ये स्कैपुला का ऊपर वाला पार्ट है, तो दैट विल बी अगेन जस्ट बाय द नेम यू कैन रिमेंबर इट इज द सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट. दैट इज द सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, now remember that through the foramen, just beyond that you will find the foramen in which the suprascapular nerve will pass. Okay, through the foramen, मतलब foramen के अंदर से you will have the suprascapular nerve which will passes the suprascapular nerve, and remember, above the ligament, above the suprascapular ligament, above the suprascapular ligament passes the suprascapular vessels. Suprascapular vessels. Okay, that is the suprascapular artery. Okay, that is the suprascapular artery. तो सिंपल कहने का ये मतलब है फोरामिन के अंदर से सुप्रास्कैपुलर नर्व विल पास. ठीक है, और फोरामिन के जस्ट अबव यू कैन फाइंड द सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, और फोरामिन के ही ऊपर से एक आर्टरी क्रॉस करती है दैट इज कॉल्ड एज द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. आर्टरी फोरामिन के अंदर से नहीं जाती, इट जस्ट पासेस अबव द फोरामिन. ओके, फोरामिन के अंदर से ओनली द सुप्रास्कैपुलर नर्व इज द वन व्हिच विल क्रॉस, and just above the foramen it is the suprascapular artery which will try to cross.
Okay. Okay guys, so I hope everyone is along with me right now. Just give me a thumbs up. Everyone just give me a thumbs up that everyone is along with me. That everyone is along with me. Yes. Yes. Vyomkesh, good. Good bache. Clear. Ronak, good. Arvind, good, good. Neo Chaudhary, Rajveer, very good. Mohammed Tanveer, Pranchal, I hope everyone is along with here. Sanya, Johnny, Lokendra, Rakshit, Kumud, Nithi, Raj, Shreya, Abdul, Shoaib, Pritika, Anmol, Lakshi, Suraj. Many students are participating today. Yeah, Afia, Abbas, Heather, Bandana, Kritika, Sagar, very good guys. I'm truly happy that you all are present over here and listening to me out so clearly. Technician, please try to just block Urfi Javed right now. ये यहाँ we are not discussing the personal aspects right now. मतलब लोगों के पास काम धंधा नहीं है तो किसी के लाइफ में जाकर उधर पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस करो. So क्या ही बोलूँ मैं. Now guys, coming on to another notch that is present, that is called as the Spinoglinoid Notch. दूसरे नोच का नाम लिखिए बच्चे, that is the Spinoglinoid Notch. Spinoglinoid Notch. And remember guys, Spinoglinoid Notch basically lies between the lateral free border of the spine and the glenoid cavity This notch शायद foramen से suprascapular nerve पास हो रही है. foramen के just above you will find the suprascapular artery. Yeah. Spinoglinoid notch, remember that this notch transmits the suprascapular vessels. Ultimately देखो ऊपर से आकर it will just pierce the notch, it will go into the spinous process. मतलब स्पाइनोक्लिनॉइड नोच से सुप्रास्पाइन से नीचे इंफ्रास्पाइनेटस में ही पास होती है. हाँ suprascapular vessels, okay, that is the arteries and nerves, okay, from the supraspinous fossa to the infraspinous fossa. The third notch that I wanted to discuss with you, it is the circumflex scapular notch, which you can see on the dash border. इस border का नाम बताइए जहां पर आपको circumflex scapular notch देखने को मिल रहा है, and that is marked with A. ये कौन सा border है where you can find the circumflex scapular notch? नेहा मैंने मार्क किया ना, that is over here, that is the notch which is present over here, just a lateral free border of the spine. Okay, you can find this notch over here. Yeah, can anyone tell me? Yeah, Pranchal, it's right, it's the lateral border. Vyomkesh, very good. शोएब तुम्हें बॉर्डर से नहीं पता चल रहा है, ये लेटरल बॉर्डर है ना यार, ये ग्लेनॉइड कैविटी है ना. तुमने फिर कल का लेक्चर देखा नहीं होगा. इट्स द ग्लेनॉइड कैविटी गाइस. यस, इट्स द ग्लेनॉइड कैविटी. या इट्स द लेटरल बॉर्डर गाइस. आई डोंट नो हाउ तुम्हें लेटरल मीडियल नहीं पता चल रहा है, फिर तो कैसे होगा. एनीवेज, सो यू कैन वेरी वेल सी राइट नाउ गाइस. या इट्स द suprascapular notch is done now. Spinoglinoid notch is done. Now coming on to the circumflex notch. Basically it is present
remember that the circumflex scapular notch, it is a groove. It is a groove on the dorsal aspect of the lateral border produced by the circumflex scapular artery. Okay, scapular artery. So yeah, it is on the dorsal aspect, guys. It's on the dorsal aspect, guys, and remember that it is just produced by the circumflex scapular artery. So apart from that, coming on to the next, that is the tubercles of the scapula. And just remember that we have the three tubercles of the scapula. The very first one, that is the Supraglenoid Tubercle. Supraglenoid Tubercle. Remember बच्चे कि ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं ब्लू से मार्क किया है, that is the glenoid cavity. That is the glenoid cavity. और glenoid cavity के जस्ट ऊपर एक ट्यूबरकल देखने को मिलेगा, that is called as the supraglenoid tubercle. glenoid cavity के जस्ट नीचे एक ट्यूबरकल देखने को मिलेगा, that is called as the infraglenoid tubercle. That is called as the infraglenoid tubercle. And infraglenoid tubercle, and you will find a tubercle on the crest of the spine. ये crest of spine है, okay? और यहाँ पर एक ट्यूबरकल देखने को मिलता है, that is tubercle of the crest of the spine. So the third is, it is the tubercle of the crest of the spine. Tubercle of the crest of the spine. Tubercle of the crest of the spine. Now guys, try to see कि supraglenoid tubercle, basically it is a small rough projection above the glenoid cavity. It is above the glenoid cavity. Above the glenoid cavity. Coming on to the infraglenoid tubercle. Remember guys that it is a rough triangular area. Okay, it is a triangular area. Okay, a rough triangular area just below the glenoid cavity, just below the glenoid cavity, and tubercle of the crest of the spine. Remember, it is a triangular rough projection. Okay, it is a triangular rough projection. कहाँ से निकल रहा है? From the lower tip of the crest of the spine. ये crest of the spine है, इसके lower tip से तुम्हें ये projection देखने को मिल रहा है. Okay, the small bony projection, a triangular rough projection coming out of the crest of the spine from the lower part. Okay, so projection from the lower tip of the crest of spine. Lower tip of the crest of spine. So that is about all the basic anatomy of the scapula. Now guys, I will be starting with the muscle attachments, and I want every one of you to be like participating, and just let me know that all of you have already like written all the notes along with me right now, and all of you are along with me to discuss the muscles and of the scapula. Remember guys, from last 4 years, muscles of the scapula, whether it is an image based question or whether it is a clinical question, from last 4 years in MCI exam, okay, it is coming continuously. It is coming continuously, and you can expect a question from this particular topic in your upcoming exam. So muscles and ligaments of the scapula are a potent topic for the upcoming exam. Yes, that's why I am putting $sign over here, so that you all can mark it in your notes and can like see कि सर ये वाला पार्ट तो अल्टीमेटली पूछा ही जाता है एग्जाम में, तो इसको तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है. और इसको अभी हम दोबारा एनाटॉमी के साथ पढ़ेंगे. तो जिन्होंने कल की क्लासेस
मतलब पहला वाला क्लास नहीं भी लिया था तो ही कैन जस्ट रिवाइज अलॉन्ग विथ मी, ही कैन जस्ट रिवाइज अलॉन्ग विथ मी। सो सबसे पहली बात, आप लोगों को स्कैपुला के दो सरफेस पता होने चाहिए। स्कैपुला के दो सरफेस होते हैं, वी हैव टू सरफेसेस ऑफ द स्कैपुला। हाँ अब्दुल तालिब, अभी हम बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, तो नाम के साथ याद होते चले जाएंगे, नाम के साथ याद होते चले जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मसल्स सारी हम लोग अभी क्लास में ही याद करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। आई एम सेइंग यू, मसल्स सारी क्लास में याद करेंगे, मतलब क्लास के अंदर ही याद करेंगे। आप पहले मुझे दो सरफेस बता दो। सपोज ये स्कैपुला है नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, तो ये आगे वाला जो सरफेस है दैट इज द एंटीरियर सरफेस, और ये सरफेस जो है आपके रिब्स के साथ अटैच हो रहा है, तो इसको कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं। सो वी हैव द एंटीरियर सरफेस, वी हैव द एंटीरियर सरफेस, और इसको कोस्टल सरफेस भी बोलते हैं क्योंकि ये रिब्स के साथ अटैच हो रहा है। यूजुअली तो स्कैपुला इज अ पोस्टीरियर बोन, बट इस बोन के दो सरफेस है, एक पीछे से रिब्स की तरफ अटैच हो रहा है और एक पीछे वाला पार्ट तो है ही। ओके, सो वी हैव द पोस्टीरियर सरफेस आल्सो गाइस, वी हैव द पोस्टीरियर सरफेस आल्सो गाइस। Now guys, try to see over here कि anterior surface पर एक fossa present होता है, that is called as the subscapularis fossa, subscapularis fossa। सबस्कैपुलरिस मतलब स्कैपुला के जस्ट अंदर, फोसा का मतलब क्या होता है, गड्ढा, जस्ट लाइक सो अल्टीमेटली एक फोसा तुम्हें देखने को मिलेगा एंटीरियर सरफेस पे, उसको बोलते हैं सबस्कैपुलरिस फोसा। और क्योंकि फोसे का नाम ही सबस्कैपुलरिस है तो अल्टीमेटली मसल का नाम क्या हो जाएगा, यस इट इज द सबस्कैपुलरिस मसल, सबस्कैपुलरिस मसल। एंड रिमेंबर कि सबस्कैपुलरिस मसल इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हियर, सो ये ओरिजिन है। ओरिजिन इंसर्शंस तो मैं एक स्लाइड में याद करा दूंगा, डोंट वरी। तो सबस्कैपुलरिस मसल यू कैन सी ओवर हियर कि एंटीरियर सरफेस पर स्कैपुला के आपको पूरे एक मसल देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज द सबस्कैपुलरिस मसल, दैट इज कॉल्ड एज द सबस्कैपुलरिस मसल। नाउ गाइस, कमिंग ऑन टू द posterior surface, coming on to the posterior surface, coming on to the posterior surface guys. Posterior surface is basically called as the dorsal surface, or just remember guys कि posterior surface is divided by the spinous process, it is divided by the spinous प्रोसेस। अब ध्यान से देखो, ये स्पाइनस प्रोसेस है, आई जस्ट मार्क इट विद ब्लू सो दैट इट्स मोर प्रोमिनेंट एंड क्लियर टू यू। ये स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस पूरे पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, अ स्मॉल हाफ ऊपर और एक नीचे की तरफ। ओके, अब सपोज ये पोस्टीरियर सरफेस है दैट आई एम शोइंग, और ये पेन स्पाइनस प्रोसेस है, तो स्पाइनस प्रोसेस जो है पोस्टीरियर सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक स्मॉल एरिया ऊपर और एक स्मॉल एरिया नीचे। सो जो स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर वाला एरिया है उसको आप नाम क्या दोगे, स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर है तो सुप्रास्पाइनस, ओके सुप्रास्पाइनस, और स्पाइनस प्रोसेस के नीचे है तो वो क्या हो जाएगा, इंफ्रास्पाइनस, वो क्या हो जाएगा, इंफ्रास्पाइनस। ओके, नाउ गाइस रिमेंबर सुप्रास्पाइनस में, supraspinous में you will find a fossa over here, that is the supraspinous fossa, supraspinous fossa, और infraspinous में you will find a fossa over here, that is the infraspinous fossa। supraspinous fossa में a muscle attachment होती है, that is called as the supraspinatus मसल, सुप्रास्पाइनेटस मसल, नाम से ही याद हो जाएगा। फोसा का नाम याद रखो, स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर वाला सुप्रास्पाइनस फोसा, सुप्रास्पाइनस फोसा में मसल सुप्रास्पाइनेटस मसल, स्पाइनस प्रोसेस के नीचे फोसा इंफ्रास्पाइनस फोसा, और यहां पर जो मसल होगी दैट इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ओके, इंफ्रास्पाइनस स्पाइनेटस मसल और इंफ्रास्पाइनस मसल। ओके,
So that is, yeah, that is, you have to just yeah, वेरी मच क्लियर अबाउट दिस. ओके, तो हमने एंटीरियर सरफेस पे पढ़ लिया कि सर एंटीरियर सरफेस पे सब स्कैपुलारिस फोसा होता है और यहाँ पर मसल होती है सब स्कैपुलारिस मसल. पोस्टीरियर सरफेस पे स्पाइनस प्रोसेस इज डिवाइडिंग इनटू अपर स्मॉल पार्ट एंड द लोअर लार्ज पार्ट. स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर है तो सुप्रास्पाइनस, सुप्रा ऊपर, सुप्रास्पाइनस फोसा होगा, सुप्रास्पाइनस मसल ओरिजिनेट करेगी. नीचे स्पाइनस प्रोसेस में इंफ्रास्पाइनस फोसा होगा और अल्टीमेटली देयर विल बी अ मसल दैट इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल. और दोनों ही मसल क्या करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं. ओरिजिन है दोनों ही मसल्स का यहाँ से, ओरिजिन है दोनों ही मसल्स का यहाँ से. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. Yeah, this is the origin. Pranchal, this is the origin of the spinous muscle. Yes, Pranchal, this is the origin. So just give me a thumbs up that it's clear now. कि हाँ सर पीछे क्या है आगे क्या है. We are now clear. Now I will talk about the borders of the scapula. Now I will talk about the borders of the scapula. Okay. चलो एक हैंडमेड डायग्राम बनाते हैं, और आपको ये ग्लेनॉइड कैविटी है. Suppose this is the glenoid cavity and remember कि glenoid cavity के नीचे वाला border क्या हो जाएगा, that is the lateral border, और ये वाला जो border हो जाएगा. Yes, very good guys, I'm truly happy that all of you are participating as of now and watching the lecture live. Yes, बच्चे, it's up to you. You guys have to be like throughout with me so that I can take regular classes for you people if you want, because ultimately it's like for your benefit. You will benefit from these lectures in upcoming exams. It's not about just you have to pass the university exams. It's about you have to come and clear the next exam in one go. And for that, the basics of every subject of the first year, second year should be clear. And that is very, very much required. And like it's up to you people how mature you are. It's in your hands like what you want to do. You will come here, if you just don't clear it in one go, you will again wait for another 1 year for the exam. Ultimately years will pass and that will be a big loss to you. So just to compensate, और मतलब आगे चल के दिक्कत नहीं हो, remember basics are the foundation for any type of exam. और बेसिक्स क्लियर है ना तो यू आर जस्ट द विनर्स. और जो क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर, आई एम एश्योरिंग यू गाइस विद फुल ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन, इफ यू आर राइटिंग द नोट्स अलोंग विद मी, इफ यू आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, you will be clearing the exam in one go. And that's like a promise I have observed throughout my teaching experiences, okay, throughout my like whatever classes I have gave. Like this is the best way. Like if you are studying daily, you will be the one who will clear the exam in one go. एक दिन में 2-4 दिन में एग्जाम क्लियर नहीं होता, 6 महीने में एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा, 6 महीने में 19 सब्जेक्ट नहीं पढ़ लोगे. इट्स यू हैव टू बी like particular from day one. Okay, let's continue. So yes, yeah, so this is the medial border guys, this is the medial border. So now let's start with the medial border guys first. Now let's start with the medial border guys. Okay, देखो medial border is basically divided. Okay, okay, medial border को भी अगर हम 2 पार्ट्स में बच्चे बांटने की कोशिश करें तो you can very well appreciate कि medial border के भी 2 aspects होते हैं, that is the costal or the anterior aspect or the anterior lip we can say, and we have the okay, remember costal or the anterior or the ventral lip. Okay, and apart from that guys, remember that we have the dorsal lip. अब देखो इसका मतलब समझो. देखो ये मैंने आपको एंटीरियर सरफेस दिखाया था, दैट इज योर हैंड. अपने हैंड को लेकर चलो, हैंड पे एंटीरियर सरफेस देखने को मिल रहा है. ओके,
सरफेस और बॉर्डर में फर्क क्या होता है कि सर सरफेस का एरिया लार्ज होता है, बॉर्डर का एरिया कम होता है। तो ये जो मेरे मिड लाइन के पास आ रहा है दैट विल बी द मीडियल बॉर्डर, दैट विल बी द मीडियल बॉर्डर। ये जहाँ पे मैंने पेन रखा है ये मीडियल बॉर्डर हो गया, आगे वाला तो एरिया हो गया, पीछे वाला भी एरिया हो गया, तो ये बॉर्डर होगा। ओके, और इस बॉर्डर के दो एस्पेक्ट होंगे बच्चे, एक जो आगे की तरफ है जो तुम देख पा रहे हो और एक पीछे की तरफ होगा। इसी बॉर्डर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक पीछे की तरफ और एक आगे की तरफ। सरफेस की बात नहीं कर रहा, सरफेस में तो एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा, बट यस सरफेस में तो एंटीरियर और पोस्टीरियर होगा, बट या guys be in the class everyone. I typically like want you to learn the muscles along with me, learn the muscles along with me, it's up to you. Okay, so you have the coastal or the anterior lip, और बच्चे ध्यान रखना कि एंटीरियर व्यू में आप देखो ये जो लिप होता है जो आगे की तरफ है, ये एंटीरियर व्यू है ना, एंटीरियर व्यू है, ये तो एंटीरियर सरफेस था पूरा का पूरा, और जस्ट मीडियल बॉर्डर पे आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पर एंटीरियर लिप पर सेरेटस एंटीरियर मसल अटैच्ड है, इट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल विच इज अटैच्ड। ओके, दैट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल विच इज अटैच्ड। तो ये हम अपने नोट्स में डालेंगे कि हाँ सर एंटीरियर लिप पर हमें सेरेटस एंटीरियर मसल दिखाई दे रही है, सो इट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल, इट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल। Okay, serratus anterior muscle, and remember that guys, dorsal lip, अब मुझे खुद बता दो, dorsal lip आपको तीन पार्ट्स में, देखो मीडियल बॉर्डर ये वाला हो गया ना, मीडियल बॉर्डर ये वाला हो गया, तो डॉर्सल लिप जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुई पड़ी है। स्पाइनस प्रोसेस एक पार्ट है, मतलब इसका टिप जो है एक पार्ट है, इसके ऊपर वाला दूसरा और इसके नीचे वाला तीसरा, ठीक है। अब सपोज ये पोस्टीरियर सरफेस है और ये स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो बॉर्डर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस या फिर एपेक्स ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस बोलेंगे, तो लिखो पहले इसको फिर समझ में आएगा। तो राइट डाउन इट इज द एपेक्स ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस और द स्पाइन, एपेक्स ऑफ द स्पाइन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव वन apex of spine to the upper part, apex of spine to upper part, and apex of spine or at full dorsal side, at full dorsal side. Now just try to see the diagram over here. First I'll try to make a hand draw diagram for you guys. Yeah, you can see that suppose this is the medial border, कि सर ये medial border है, और this is the posterior view, this is the posterior view guys, and remember कि posterior view को हम divide करते हैं, there is a spinous process, there is a spinous process over here which is actually dividing the posterior view into two parts, है ना। तो ultimately you will have क्या होगा, एक पार्ट वो होगा which is actually present at the tip of the spine, that is the apex of the spine, apex of spine। एक पार्ट होगा apex of spine से ऊपर, okay, apex of spine to the upper part, और one part it is the full dorsal side, it is the full dorsal side, we are discussing the dorsal lip now, okay, at the full dorsal side। तो apex of the spine पे you will find a muscle that is called as the rhomboid minor muscle, मसल होगी rhomboid, apex of spine यानी कि यहाँ पर मसल जो इंसर्ट होती है that is the rhomboid minor muscle, that is the rhomboid minor muscle, okay, rhomboid minor muscle। apex of spine से upper part में बच्चे जो मसल अटैच होती है यहाँ पर पूरे पे, that is the levator scapula, that is the levator scapulae, and just write down it is the levator scapulae, and apex of spine at full dorsal side, okay, यहाँ पर मसल होगी rhomboid major, rhomboid major, rhomboid major, rhomboid major, और तीनों ही मसल इंसर्ट करती है, तीनों ही मसल इंसर्शन देखिए यहाँ पर। अब
यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि हाँ सर एपेक्स ऑफ द स्पाइन, अब यहाँ पे देखो ये पोस्टीरियर व्यू है, सबको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज दिस इज द पोस्टीरियर व्यू, और सर लाइक ओके नाउ वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट इट इन द डायग्राम एज वेल। यू कैन सी कि एपेक्स ऑफ द स्पाइन पे एक मसल है, दैट इज द रोम्बॉइड माइनर मसल। एपेक्स ऑफ स्पाइन से नीचे डॉर्सल लिप पर यू कैन फाइंड द रोम्बॉइड मेजर मसल, और एपेक्स ऑफ स्पाइन से ऊपर दैट इज द लिवेटर स्कैपुला। लिवेटर का मतलब ही क्या होता है ऊपर, और स्कैपुला का मसल है द लिवेटर स्कैपुला माइनर और मेजर। मेजर हमेशा नीचे की तरफ होता है, दिस इज अ ट्रिक, दोनों साइड मेजर हमेशा नीचे की साइड होगा, एंड दैट इज द ट्रिक यू गाइस हैव टू रिमेंबर, मेजर विल बी ऑन द लोअर साइड। यस गाइस, आई होप इट्स क्लियर अबाउट द मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर के दो एस्पेक्ट्स गाइस, मीडियल बॉर्डर के दो एस्पेक्ट्स, एंटीरियर दैट इज द सेरेटस एंटीरियर मसल, ओके हाँ सेरेटस एंटीरियर, यस यस yes yes it is also insertion, yes I hope it's clear, yes it's also insertion, yeah insertion इंसर्शन है बच्चे, इंसर्शन है। इंसर्शन और ऑरिजिन की टेंशन मतलब वो एक स्लाइड में, मैं अभी बाद में तुम्हें दिखाऊंगा, वो एक स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। डोंट एब्सोल्युटली वरी अबाउट द इंसर्शन एंड ऑरिजिन, yeah don't worry after the insertion, I'll just like after the attachments I'll give you a trick to remember, don't absolutely worry, okay yeah I hope the medial border is clear to everyone कि medial border के सर दो एस्पेक्ट, एक आगे की तरफ जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे you can see that is the serratus anterior muscle, और एक पीछे की तरफ that is the तीन मसल्स है, levator scapula, rhomboid minor, rhomboid major, yes very good guys, very good, you all are participating, that's like perfectly okay with me today। जो अटेंडेंस के लिए आए थे वो वैसे ही चले गए हैं। so now coming on to the lateral border guys, now coming on to the lateral border, and remember कि lateral border में आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है अगेन, एक एंटीरियर एस्पेक्ट और जिसको हम लोग कोस्टल एस्पेक्ट भी बोलते हैं और एंटीरियर लिप भी बोलते हैं, या एंटीरियर लिप भी बोलते हैं। एंड रिमेंबर कि एंटीरियर लिप पे देयर इज नो अटैचमेंट, नो अटैचमेंट। शोएब यू कैन वन वन थिंग, इस वीडियो को दोबारा से पीछे करके यू कैन वॉच दैट पार्ट अगेन, बिकॉज आई डोंट नो you are exactly the Shoaib which I know or you are someone else, because continuously you are creating some kind of issues, so please kindly leave। So costal or anterior lip, basically there is no attachment, and write down it only acts as lever, only act as a lever to elevate the bone, to elevate the bone। To elevate the bone, yes guys, now coming please guys ignore this particular person right now, try to focus on some other points that I'm discussing as well। Now guys remember that we have the posterior or the dorsal lip, posterior or the dorsal lip which is present, and remember that again I will divide it into three parts, again we will divide it into three parts। The very first one, that is the upper 2/3 of dorsal aspect of lateral border, and that gives rise to the teres minor muscle, teres minor muscle। Now suppose guys, if I'm just giving this particular is the glenoid cavity, और glenoid cavity का जो नीचे वाला border होता है that is the lateral border, ये पूरा का पूरा lateral border है, हाँ सर ये हमें पता है that is the lateral border। and remember guys कि इस lateral border में you can very well appreciate कि upper 2/3 जो हिस्सा है, upper 2/3 part, ये वाला जो part है that is the upper 2/3,
यहाँ पर एक मसल अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड एज द टेरेस माइनर मसल। और यही बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है कि 2/3 है, सबसे ज्यादा है तो मेजर होगी। नहीं बच्चे, मार्क दिस पॉइंट एज वेरी क्लियर इन योर माइंड, इट इज द टेरेस माइनर मसल, इट इज द टेरेस माइनर मसल। मेजोरिटी 2/3 टेरेस माइनर है, और जस्ट इसके नीचे गाइस you will find 1/3, it is the teres major, it is the teres major, it is the teres major। और मैंने आप लोगों को बताया था मेजर हमेशा नीचे की तरफ आता है, रोम्बॉइड मेजर भी मीडियल साइड पर नीचे की तरफ था, ठीक है, और यहाँ पर भी लेटरल साइड भी मेजर नीचे की तरफ है। सो इट इज द लोअर 1/3, ओके, लोअर 1/3 ऑफ डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ लेटरल बॉर्डर। तो कौन सी मसल हो गई, दैट इज द टेरेस मेजर मसल, दैट इज द टेरेस मेजर मसल, दैट इज द टेरेस मेजर मसल। यस, एंड वन मोर थिंग, बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर कि एक मसल और निकलती है, दैट इज कॉल्ड एज द लेटिसिमस डॉर्सी, दैट अराइजेस फ्रॉम द dorsal aspect of the lateral border of the inferior angle, and remember it is the latissimus dorsi muscle, latissimus dorsi muscle, okay, it is the latissimus dorsi muscle। inferior angle तुम लोगों को पता है नीचे की तरफ होता है, so it is very much closer over here and you will find a muscle over here, that is the latissimus dorsi muscle, latissimus dorsi muscle, okay। ये teres major के भी just नीचे होता है, just closer to the inferior angle of the scapula, and you can find these three muscles, you can find these three muscles, okay, you can find these three muscles and just try to visualize it over here कि सर ये आपने मसल्स हमें दिखाई। तो यू कैन सी दैट टेरेस माइनर 2/3 अपर, टेरेस मेजर 1/3 लोअर, और इंफीरियर एंगल पर लेटिसिमस डॉर्सी, इंफीरियर एंगल पर लेटिसिमस डॉर्सी। तो ये तीनों मसल्स आप लोगों को क्लियर हो गई, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला डन, सारे मसल्स डन। आई होप एवरीवन like understood all these muscles, everyone understood all these muscles? Yes, just give me a thumbs up guys that you all understood the muscles right now. Yeah, just give me a thumbs up guys, I'm waiting for your active participation right now, because I will be the one who will be asking questions, okay, after some time, and you have to answer me, okay? Yeah, okay, yes, very good Vyomkesh, very good guys, very good Kapil, very good Vyomkesh, very good, very good guys। One more thing that I wanted to discuss about the superior border now, okay, superior border, only one point you have to write, superior border, okay, put the heading as the superior border, and remember, yeah, everyone is fine with it, yeah, very good guys, please participate and watch the lecture, that's much needed right now। Yes, superior border guys, you can very well see that superior border पे यहाँ पर notch present होता है, that is the suprascapular notch, okay। और ये superior border है, medial है, lateral border, medial border और superior border। and just remember superior border पर यहाँ पर, okay, basically muscle is present, that is called as the Omo Hyoid muscle, just near the suprascapular notch you will find a muscle that is called as the Omo Hyoid muscle, okay। So remember it arises from the suprascapular ligament, it arises from the suprascapular ligament, and remember, okay, and thus joining the superior border, okay। So एक मसल आपको superior border पे याद रखनी है, that is the Omo Hyoid muscle,
You can very well visualize it over here. You can see that is the inferior belly of the Omo Hyoid muscle which is present over here. That I have marked just near the suprascapular notch. You will be able to recognize that, yeah, this is the Omo Hyoid muscle, inferior belly of the Omo Hyoid muscle, which is present over here. Yes, which is present over here. Yeah. So that is about all the borders, all the surfaces of the scapula. That is about all the borders, all the surfaces of the scapula. And now just one more part and the muscles will be done. You can appreciate कि सर एक glenoid cavity होती है और ये lateral border है. ये lateral border है और इसके ऊपर just we have the glenoid cavity. Glenoid cavity which articulates with the head of the humerus, and now you can see that two muscles are attached above. Okay, so remember, and below the glenoid cavity you can see glenoid cavity के ऊपर basically एक tubercle present होता है, that is called as the Supraglenoid Tubercle. और इस tubercle से एक मसल निकलती है, that is called as the long head of triceps muscle. और इसी glenoid cavity के नीचे एक tubercle होता है, that is called as the infraglenoid tubercle. And remember, a muscle is basically coming from this side and it is the, okay, it's not our triceps, okay, the above one, it is the biceps, just mistaken, yeah, just correct it guys, it is the biceps, which is basically originating from the supraglenoid tubercle, and from the infraglenoid tubercle you will have the long head of triceps muscle, long head of triceps muscle. So that are the two muscles that you have to know. और यही चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, which I have included in my presentation. You can see, okay, the long head of triceps just down over here, long head of the triceps, and just above it will be the long head of the biceps also, but since it's not visible in this particular view, okay, so you can see in the anterior view it is the long head of the biceps, that is from the supraglenoid tubercle, okay, supraglenoid tubercle, और glenoid cavity के नीचे वाला, that is the infraglenoid tubercle, that is the long head of triceps. Infraglenoid tubercle, that is the long head of triceps. I hope it's clear to everyone now. I hope it's clear everyone. All the muscle attachments are done. Okay. चलो, एक चीज और, आप लोग फटाफट से लिगामेंट्स के बारे में पॉइंट्स डाल लो, 2-4 पॉइंट्स लिगामेंट्स के बारे में भी लिख लेते हैं. And you guys, everyone know which ligaments I'm talking now. I will just write the names, okay. You have the very first ligament, that is the Coracoacromial ligament, and you know that Coracoacromial ligament basically extends from the tip of the acromion process, okay, it's from the tip of acromion process to the lateral border of the coracoid process, That was the free border I told. It's just the ligament which is coming from the acromial process and attaching to the coracoid process, and a joint will be formed. Can anyone tell me the name of the joint over here? I'm just waiting for your answers, guys. Just tell me the name of the joint that will be present over here. Yes. So I'm just waiting for your answers. Meanwhile, I'll just write the other one, that is the Coracoclavicular ligament. And you all know that Coracoclavicular ligament basically has two parts. Coracoclavicular ligament has two parts, that is the conoid one,
that is the conoid part, and the other one, that is the trapezoid part. That is the trapezoid part. I'm again waiting for the answers, guys. Which joint, the first one that is marked with A, will it form? Are you all participating, guys? Yes, Abdul, very good. It is the Coraco joint. Yeah, ligament भी है, bones भी join. Yeah, very good, guys, very good. Chalo, it's up to you guys. Waiting for, yeah, Abdul, very good, Abdul. Others, I don't know what they are doing. Coraco, acromial, yeah, one of the same things. Abu Bakar, Tarim, very good. Conoid part and the trapezoid part. Okay. So conoid और trapezoid तो हमने पढ़ा था, tubercle वाला part भी होता है. तो Coracoclavicular ligament I have already discussed before. Okay, we have the suprascapular ligament. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था suprascapular ligament. Okay, we have the capsule of the shoulder joint. The fourth one, that is the capsule of the shoulder joint, and you all know that capsule of the shoulder joint is basically attached around the glenoid cavity. Okay, ये glenoid cavity होती है ना, इसकी just margin पर attach होता है, that is the capsule of the shoulder joint. And apart from that, one more thing that you will see over here, that is the superior, inferior and middle, superior, inferior and middle. Okay, glenohumeral ligament, ये बिल्कुल ग्लिनॉइड कैविटी के जस्ट ऊपर, मिडल में और नीचे होता है. सो दैट इज द सुपीरियर, इंफीरियर, मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट. ओके, और अल्टीमेटली तुम्हें पता है हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है ग्लिनॉइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता है, दैट विल अगेन फॉर्म अ जॉइंट. ओके, so that is the shoulder joint which is formed. So that's in nutshell about the different ligaments over here, different ligaments over here. That is like in nutshell, that's in nutshell. Okay, now guys, coming on to one more aspect over here that I wanted to discuss, what are the functions of the scapula. So remember that the function that is performed by the scapula, just write in 1-2 points, that it's involved in the transmission of weight of the upper limb to the clavicle, और मैंने आपको बताया था कि ये क्लैविकल है सपोज, और ये ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, ये सारा का सारा वेट क्लैविकल को देते हैं. इवन स्कैपुला भी अपना वेट क्लैविकल को ट्रांसफर करती है, और क्लैविकल जो है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन से वेट लेकर एक्सियल स्केलेटन को ट्रांसफर करता है. एक्सियल स्केलेटन जो आपकी मिडलाइन है, जो स्टर्नम वगैरह हो गई, जो मिडलाइन ऑफ द बॉडी में जितनी बोन्स आ रही है, उसमें सारा का सारा वेट ट्रांसफर करता है अपर लिम्ब का. सो अल्टीमेटली स्कैपुला का भी यही काम है, वो सारा का सारा वेट जो है, इट इज जस्ट ट्रांसफरिंग इट टू द क्लैविकल, upper limb to the clavicle. Okay, and one more thing that is you all have read right now, it provides a wide surface for muscle attachments. You can see variety of muscles that are attached, okay, on the surfaces, on the borders, okay, of the scapula, on the surfaces, on the borders of the scapula. Yes, Ashok Chaudhary, it is the ball and socket joint. Okay, चार हैं, there are 4 ball and socket joint which you have to study. The one Ashok Chaudhary has already told, the other 3 if you guys can write it in the chat box, I will be happier to address it. I mean, I'll be happier to see that how you all guys are just writing in the chat box. Guys, don't try to leave the class right now, because I will be discussing the okay, I'll be discussing the origin and insertion of muscles now. Guys, very important slide. I'm marking it with the $sign. Origin and insertion of muscle. Origin and insertion of muscles. Now guys, try to see that origin को कैसे याद रखेंगे सर. Origin तो हमें पता ही नहीं है,
तो जस्ट रिमेंबर इन निमोनिक कि एसएससी का एक एग्जाम होता है, एसएससी का एक एग्जाम होता है जिसके लिए डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है। तो एसएससी के लिए डेट ऑफ बर्थ बतलाई। सो अल्टीमेटली दिस इज द शॉर्ट ट्रिक दैट यू कैन हैव। इसमें बस 2 ए को क्रॉस कर देना। तो एसएससी इज अ एग्जाम विच में डेट ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट है। तो एसएससी डेट ऑफ बर्थ बतलाई, दिस इज अ स्मॉल ट्रिक दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द origin of the muscles which are originating from the scapula. The very first one, it is the supraspinous muscle, supraspinatus, supraspinous muscle. Okay, the next you all know that subscapularis, surface वाली सारी origin है, आगे की हो पीछे की हो सारी origin है, subscapularis muscle. Okay, you know that we have coraco brachialis muscle जो अभी हमने टिप पर पढ़ी थी, coraco brachialis muscle, coracobrachialis muscle. We have the deltoid muscle origin, deltoid muscle origin. हमने suprascapular notch पर Omo Hyoid muscle पढ़ी थी, Omo Hyoid muscle. Apart from that guys, remember कि we have the biceps brachii, long head, ओके, brachialis muscle, ठीक है, biceps brachii, short head, T से 3 मसल्स हैं, टेरेस मेजर मसल, टेरेस मेजर मसल, टेरेस माइनर मसल and triceps brachii, triceps brachii, long head, long head of triceps muscle था ना, long head of triceps muscle था, triceps brachii, long head, it's the same thing. Okay, triceps brachii, long head. And you all know that कि supraspinous है तो infraspinous तो होगी ही होगी, infraspinous muscle, infraspinous muscle. So origin तो याद हो गया, SSC DOB बतलाई. So that is the simple mnemonic to remember the muscles, that is the simple mnemonic to remember the muscle. Coming on to the insertion of the muscles guys, एक बहुत ही prominent serial था, I'll not take the name. तो उस serial में ना like there was a very famous character that is called as Sarla, and yeah, तो सरला की वजह से ना टीआरपी बहुत आती थी सीरियल की. सो दैट इज द वे यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज द सरला which is involved in the TRP of that particular show, that is involved in the TRP of that particular show. So SA stands for serratus anterior, serratus anterior, serratus anterior, and after that R stands for rhomboid minor, rhomboid minor, or LA. Basically you have to just remember LA, that is the levator scapula, जो हमने मीडियल बॉर्डर पे पढ़ा था. ठीक है, डॉर्सल एस्पेक्ट, अपर टिप से जस्ट अपर वाला पार्ट जो हो गया लेवेटर स्कैपुला. टी से ट्रेपीजियस इंसर्शन है. rhomboid major, that is the rhomboid major, you guys have to remember rhomboid major, sorry major, हाँ minor हो गया, major भी इंसर्शन है. और pectoralis minor, pectoralis minor. So that is the small trick in one slide कि origin और insertion सर कैसे याद रखेंगे. सारी muscles भी याद हो गई एक स्लाइड में और सारी origin insertion भी एक ही स्लाइड में याद हो गई. I hope everyone is participating, everyone understood what we have just like written on this particular page. Yeah, Oma, very good. Yes, yes. So एक दो बार देखोगे ना मसल्स को कि हाँ सर सब स्कैपुलरिस हो गई, पीछे हाथ पे प्रैक्टिस कर लो, बहुत इजी है. मीडियल, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर सब हाथ पे बन जाएगा.
हाथ पे प्रैक्टिस करने की आदत डालो, एग्जाम में तुम्हारा हाथ साथ में जाएगा एंड इट्स द बेस्ट थिंग। जितना देखकर एक विजुअलाइज करके याद करोगे उतना बेहतर याद होता है। यस, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, I'm totally happy that all of you are present and just listening the lecture. Okay, I just want everyone to be like answering. Yeah, over here. Yes. हाँ, मेजर माइनर बच्चे दोनों में मेजर लोकेंद्र नीचे की तरफ होता है ना यार, मैंने अभी बताया मेजर हमेशा नीचे की तरफ होता है। यस, मेजर हमेशा नीचे की तरफ होता है। ओके guys, just one more point that I wanted to discuss with you, that is the articulation. आर्टिकुलेशन मतलब जॉइंट्स की बात कर रहे हैं, और जॉइंट्स आप लोगों को पहला ही पता चल चुका है, दैट इज द एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट। यू कैन वेरी वेल सी ओवर हियर, राइट डाउन जस्ट द नेम ऑफ द जॉइंट, एक्रोमियन प्रोसेस और क्लाविकल। एक्रोमियोक्लाविकुलर, सचिन, हाँ सब हाथ में ही है। आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है इस समय। तो हम क्योंकि सार्वजनिक माध्यम पर हैं अभी, तो हम आपत्तिजनक बातों का पर ध्यान नहीं देंगे, और फिलहाल हम जॉइंट्स के ऊपर सत्संग करेंगे। आई मीन विल डिस्कस अबाउट जॉइंट्स राइट नाउ, सो काइंडली लाइक बी इन द क्लास एंड या अटेंटिव। ऑरिजिन में आई वाली इंफ्रास्पाइनस है ना बच्चे, इंफ्रास्पाइनेटस बताई थी ना अर्सलान, इंफ्रास्पाइनस, स्पाइनस प्रोसेस के नीचे वाली इंफ्रास्पाइनेटस मसल वाली है, ठीक है। सो यस, सचिन इज लाइक ओके। तो शोल्डर जॉइंट तो पता चल गया, हेड ऑफ द ह्यूमरस है, हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ओके। और अल्टीमेटली इट इज विद द ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी। तो ये दोनों जॉइंट्स आप लोगों को पता चल गए, एक तो शोल्डर जॉइंट हो गया, कोराको एक्रोमियल जॉइंट हो गया, दैट इज द आर्टिकुलेशंस ऑफ द स्कैपुला, दैट इज द आर्टिकुलेशंस ऑफ द स्कैपुला गाइस, ओके। apart from that guys, try to remember the fact कि yeah, what else, that is the clinical anatomy। ये क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 6 बार पेपर में आ चुका है, मतलब 6 बार तो नहीं, एटलीस्ट 4 टाइम्स तो ये रिपीट हुआ ही हुआ है। अगस्त, दिसंबर, जून, उसके बाद भी ये क्वेश्चन आया है। एंड दिस कंडीशन वेयर यू आस्क द पेशेंट टू पुट हैंड्स ऑन द वॉल, यू विल सी द, ये कौन सा बॉर्डर है बच्चे? नाउ आंसर मी द क्वेश्चन, विच बॉर्डर इज दिस? एंड नाउ आई विल राइट द नेम ऑफ द डिजीज, दैट इज द winging of scapula, that is the winging of scapula, and I will ask you which border is this? Yes. I'm waiting for the answers guys, I'm waiting for the answers everyone. Which border is this guys? Medial, very good, Shoaib Ali Khan, Pratap, very good, very good. मेरे students मतलब perfect, Ashok, Pranjal, Sachin, Shakir, Arvind, Kapil, very good. Yeah, it is the medial border which is more prominent, which it is the medial border which is more prominent over here. You can see that, yeah, it is the medial border which is more prominent over here. It is the medial border which is more prominent, and just write down, yeah, it is the winging of the scapula. And remember, it is damage to the long thoracic nerve, long thoracic nerve, nerve of Bell, इसको हम nerve of Bell भी बोलते हैं। और अब तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा why it is like that, it is the nerve to serratus anterior। serratus anterior अभी हमने पढ़ा कि medial border के आगे वाली साइड पर होता है। सेरेटस एंटीरियर अभी हमने आगे पढ़ा कि दिस मसल इज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, और उस मसल को सप्लाई कौन सी करेगी? नर्व, दैट इज द नर्व टू सेरेटस एंटीरियर मसल। तो सेरेटस एंटीरियर अगर इस नर्व में डैमेज हो जाती है, दिस मसल विल आल्सो गेट डैमेज एंड इट विल अगेन लीड टू द विंगिंग ऑफ द स्कैपुला, एब्नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला बोन, एंड दैट इज द रीजन वेयर यू कैन सी द मीडियल बॉर्डर बिकम्स मोर प्रोमिनेंट, द मीडियल बॉर्डर becomes more prominent. Okay, the medial border becomes more prominent, the medial border becomes more prominent, yeah, the medial border becomes more prominent, yeah, you are just able to see this, yes,
the medial border becomes more prominent, that is the winging of the scapula. Long thoracic nerve, nerve of Pell, that is supplying to serratus anterior muscle. medial border की anterior aspect में पढ़ा था, ये वाला border lateral हो गया, ये inferior angle हो गया, यहीं पर infra hyoid muscle क्या कहते हैं, you will get pectoralis minor muscle, ऊपर वाला superior border तुम्हें देखने को मिलता है, shoulder joint, सारी चीजें तुम्हें एक particular view में, हाँ, yes, medial border becomes more prominent. बच्चे एक मसल को serratus anterior को एक नर्व सप्लाई करती है, that is the long thoracic nerve या nerve of Pell बोलते हैं, या फिर nerve to serratus anterior वे से. And apart from that guys, this nerve get damaged and ultimately the muscles will also get damaged over there. muscle को supply नहीं होगी nerve की, तो ultimately no sensations will be there. So what will happen, the medial border, when you ask the patient to put the hands on the wall, the medial border will become more prominent. Okay, you can see the medial border becoming more prominent, and that is why it is called as the winging of the scapula. That's the abnormal movement which you will be able to see in the patient. Okay, so I hope the lecture is clear to everyone. The lecture is clear to everyone. Yeah, the lecture is clear to everyone. So I'm just giving out my number over here. That is my WhatsApp number. And it is 9315795382. I like perfectly thank you everyone for your patience, for your listening me out. I mean, I am quite happy that at least 70% students retained today in the class. 70% students retained in the class. I hope you all understood all the clinical anatomy, the muscles, everything. It's like clear as sap. Very good. So I hope everything is so much fine over here. Yes, so that's my WhatsApp number. Any doubts, any particular doubts which you actually address while reading the textbooks, you are most welcome to ask me in the comment section below of this video, or personally to my WhatsApp also. You can follow me on Instagram as docsmayan, that's my Instagram ID. And you can also like text me on Telegram, that is the Dr. Abhijit Kumar Medical Insights, or Medicine Insights, I think it's the name. Dr. Abhijit Kumar Medicine Insights. Medicine Insights is the name of the Telegram group. I hope everything is clear. Yeah. Pooja, Shoaib, Uma, Manisha, Arvind, Abdul, Sanvi, Lakshmi. I hope everyone understood the muscles, the origin, the insertion, the borders, the fossas, the tubercles, the notches. Everything is clear to everyone, I suppose. Everything is clear to everyone. So that's like a very warm response to everyone over here. And I'm quite happy that every one of you participated today with all your like energy. Yes, kindly maintain this, and yeah, kindly maintain this energy throughout the end. Okay, daily attend the lecture without fail, without excuses, without complaints. Attend the lecture daily, make notes. Ultimately this is the one which will help you in your upcoming exams. Okay, thank you guys, thank you so very much. And yeah, I would request everyone to just, whosoever has made the notes, kindly text me on the WhatsApp that you all have attended the lecture very carefully. Make a PDF, send me on to my WhatsApp number. I will be happier to see that all of you attended and wrote the notes simultaneously when I was writing along with you on the screen. So yes, thank you so very much. Okay, very good guys. Like, I'm too happy that you all participated today. Very good. Good students. Bye, good night, and just take care. Good night and take care.